Hi friends, come on, let's begin our today's class of working capital. We are doing type 3 in working capital management. Okay. Now here, again in type 3, we are going to prepare the working capital statement. Okay, same thing, working capital statement. Like how much working capital are we supposed to have in a given organization? That is current assets minus current liabilities. We will get our working capital and add our contingency. Okay, so this should be the working capital which an organization should ideally have. Now the same thing, but we are going to work on the basis of cash cost concept. Okay, now what is this cash cost concept? Here we are going to work out our working capital, okay, based on actual cash expenses. Thus, we will not include depreciation and we will also exclude profit because we are also going to only see the cost. Okay, so non-cash expenses for us is going to be depreciation. बिकॉज चलो अगर रॉ मटेरियल्स है, स्टॉक में अपना डेप्रीसिएशन लगता ही है, तो रॉ मटेरियल्स में डेप्रीसिएशन नहीं है, बट वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स में डेप्रीसिएशन इज देयर ऑन दोज गुड्स. ओके, बिकॉज फिनिश गुड्स अगर मेरा 3 महीने तक पड़ा ही है, उसके बाद सेल हो रहा है, राइट, सो देयर इज डेप्रीसिएशन फैक्टर विच इज देयर इन द फिनिश गुड्स ऑल्सो. सो कैश cost concept says that we will take only cash expenses. So depreciation we will not include and we will work out based on cost. Okay, so profit we will remove it. When I say I'm going to work out on basis of cost, so means I'm saying I will take sales. From there I will not take depreciation expense and I will also not take my NPBT. Only then I will get my cost. Okay. So non-cash items and profit should not be recorded. So in case if they are included, we will exclude it. Okay. So here also in the sums, they will give you the entire details to prepare our statement, revenue statement. And also they will give us the duration of the working cycle. Based on that, we will prepare our working capital statement. Only we have to be careful that first we have to remove depreciation from WIP. We also have to remove depreciation from finished goods if it is included. And whenever we will calculate, okay, working operating cycle for debtors, okay, the time period which I give to my debtors, I will not calculate at sales, which we were doing earlier. Debtors हम sales पे कर रहे थे ना, अभी जो last sum हमने किया, तो debtors हम sales पे ले रहे थे, correct? As a ratio on sales, but now we will not take it on sales, we will take it on cost price. In the sum they will inform you whether you are supposed to do it as per cash cost concept, so then you will adopt this concept. Sales minus NPBT minus depreciation of the goods sold, and sales will be at the cost price. Based on that we will work out our debtors. Rest entire sum remains the same thing. Okay, so let's start with a sum. With that, we will have this concept also clear. Now, X Cement Company has 5 lakh drums of cement, means 5 lakh units. ठीक है? From the following information given below, determine the net working capital required for the year. Now, cost of goods, यानी raw materials दिया है हमें. Okay, एक है gypsum, limestone, coal. There are 4 types of materials, and also there is a packing material जो buy किया है. Price per unit. Direct labor, factory overheads, it includes depreciation of ₹10. ठीक है. So 30 minus 10 करेंगे तो यहाँ पे factory overheads 20 आएगा. Administration overhead ₹20 per unit. Selling overheads 25 per unit. So I am coming with my total cost as 205. Profit margin ₹45. Selling price is 250. On that I have to add a tax. So now I am selling to my, the invoice which I make for my customers, I am making it at ₹275. Now the additional information is given. They are saying
The desired period for holding these raw materials, gypsum is for 3 months, limestone 1 month, coal 2.5 months, packing material 1.5 months. Product processing period 0.5, that means they are talking about work in progress. Product processing. Finished goods holding period 1 month. Okay, यानी ये goods बनने के बाद 1 महीना मेरे गोडाउन में रहने के बाद वो बिकता है. Debtors credit 3 months. Minimum desired cash rupees 25 lakhs. Cash is already given to me. Current liabilities is given to me, and 10% of contingency is also given to me. I have to follow cash cost method. ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम अपना रेवेन्यू स्टेटमेंट बना लेते. चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 14. ओके, रेवेन्यू स्टेटमेंट. Revenue statement. Particulars, amount. Make 2 columns of amount, and you can write your price per unit. Okay, revenue statement we are going to make for 5 lakh units. ठीक है, 5 lakh units of drums of cement है ना. तो particulars, amount and per unit कर लो. सबसे पहला अपना सेल्स वी विल टेक इट एज 275 बिकॉज माई इनवॉइस प्राइस इज 275. आई हैव टू पे दिस सेल्स टैक्स. ओके, सो 275 ले लिया. उनटू 5 lakhs अगर मैं करती हूँ, सो अमाउंट आई विल से इन लैक्स. आई एम पुटिंग माई अमाउंट्स एज इन लैक्स. इफ यू विल डू 5 lakhs करो कैलसी पे, इंटू प्रेस इंटू ट्वाइस and do 275. Okay, you will get 13 crores and 75 lakhs. Correct? So I am writing directly over here 1375. You can remove the 5 zeros. Okay, so amount in lakhs. ठीक है, अभी सेल्स के बाद I have to subtract my cost of goods sold. ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मैंने बोला है तुम्हें क्या आएगा, पहले मटीरियल्स. तो चलो पहले मटीरियल्स कर लेते हैं. मटीरियल्स में क्या क्या है अपने पास, जिप्सम, लाइमस्टोन, कोल एंड पैकिंग मटीरियल. जस्ट अ मिनट. ठीक है, तो पहले जिप्सम 25, लाइमस्टोन इज 15, कोल 30 एंड पैकिंग मटीरियल 30. तो ये सब मेरे रॉ मटीरियल्स है. तो प्राइस लिख देते हैं हम 25, 15. एक मिनट. मटीरियल्स में सबसे पहला है अपना जिप्सम, देन वी हैव लाइमस्टोन. ठीक है, लिख लो लाइमस्टोन भी. देन वी हैव कोल एंड वी हैव पैकिंग मटीरियल. ओके, सो 25, 15, 30 एंड 10. ओके, अभी मैंने तुम्हें बताया 5 lakhs ट्वाइस यू डू इंटू. फर्स्ट वी डिड 275. नाउ जस्ट प्रेस इंटू 25. देखो आंसर आएगा तुम्हें 5 lakhs इंटू 275. Then do into 25. You will get 125. Got it? तो वो बार बार नहीं करना पड़ेगा. और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल से 5 lakhs से करो. 5 lakhs इंटू 15 करेंगे तो 75 lakhs आ रहा है. ओके, आई एम राइटिंग ओनली the numbers because I have already written above in lakhs. Coal again into 30 कर लो. You will get 150. Okay, and last में packing material is 10 into 5 lakhs, so 50. ठीक है, so in my cost of goods sold material हो गया. अभी overhead, labor. First is material, second is labor. Labor also they have given me per unit. My direct labor is 50. ठीक है, तो 50 into 5 lakhs will give me 250. And last I have the overheads, factory overheads. Third. Okay, overheads. Overheads में I have to remove depreciation. 30 minus 10. 10 is for depreciation. So I will take here as 20. So now do 5 lakhs into 20.
Okay, that will be 100. ठीक है, अमाउंट डायरेक्टली इनटू लैक्स में 5 zeros पीछे से तुम हटा सकते हो. तो ये हो गया यहाँ तक. अभी डेप्रीसिएशन हम अलग से लिख लेंगे. ओवरहेड्स हो गया, डेप्रीसिएशन अलग से लिख लो. डेप्रीसिएशन इज 10 ना, तो यहाँ पे लिख लो डेप्रीसिएशन. ये अपना रेवेन्यू स्टेटमेंट है, उसमें डेप्रीसिएशन हम लिखेंगे. ओके, ओवरहेड्स अलग से लिखेंगे विदाउट डेप्रीसिएशन, एंड डेप्रीसिएशन वी रिकॉर्डेड सेपरेटली. ओके, सो मटीरियल्स, लेबर, ओवरहेड्स, डेप्रीसिएशन सब साथ में हो गया. तो नाउ माय COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. My cost of goods sold is coming to 800. Therefore, gross profit will now be 1375 minus 800. That is going to be 575. Okay, now on my this gross profit, I will also have my other expenses to be reduced to get my net profit. So my other expenses are administration overheads. Then I also have selling overheads. Administration overheads cost per unit is 20 and selling overheads is 25. So 20 and 25. Administration overheads 100 and this will be 125. Also, I have to pay sales tax. It is going to be my expense. I have to pay this to my government. So, sales tax are at 25. 25 into 5 lakhs again 125. Therefore, my net profit, from my gross profit, I'll subtract all these expenses. So, my net profit is coming as 225 lakhs. Okay. So this was my revenue statement. रेवेन्यू स्टेटमेंट एक बार बन गया, फिर कोई टेंशन नहीं. अभी वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट ऑन कैश कॉस्ट बेसिस. वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट ऑन कैश कॉस्ट कॉन्सेप्ट. Okay, so we were writing particulars. ठीक है, particulars. Then we have amounts in lakhs, then duration and the working note. ठीक है, particulars में we will start with current assets. current assets में first is stock, है ना. तो अभी stock में first will be raw materials. So raw materials is our gypsum, limestone, coal and packing material. ठीक है, right? So duration they have already given to me. See, duration they have given to me as for gypsum 3 months, limestone 1 month, coal 2.5 and packing material 1.5 month. ठीक है, so duration gypsum में लिख दो 3. Okay, 3. In limestone it is 1, coal it is 2.5 and packing material is 1.5. Okay, so now if we see gypsum as per our revenue statement, okay, the amount we have spent, okay, for the material as a gypsum is 125. This is the revenue statement for the full 12 months, the whole year. We have to find it as per our duration for the operating cycle duration. So this will be 125 into 3 divided by 12. So here I think you will get 1,25,000. No, 125 lakhs into 3 divided by 12. You are going to get 31,25,000. Okay, so you can put 31.25 also. Now limestone, the total amount of materials on limestone is 75.
Okay, my duration period is 1. So 75 into 1 divided by 12. So 75 lakhs divided by 12. 6 lakhs 25,000. Okay. Now coal is for 2.5 months. Coal total is 150 lakhs. So 150 into 2.5 divided by 12. So 150 lakhs into 2.5 divided by 12. Okay, so you will get 31 lakh again over here. 31 lakh 25,000. And packing material, which is 50 lakh into 1.5 divided by 12. Okay. Into 1.5 divided by 12. 6 lakhs 25,000. Okay. So total of stock is done. Packing material हो गया. Okay. Raw materials base पे. Now after raw materials, work in progress. Now work in progress, they have told me the processing period is 0.5. 0.5. Yesterday I was explaining here, okay, and otherwise also, like अगर नहीं समझा है, work in progress, whenever we calculate, we take full amount on materials, half of labor and half of overheads. ठीक है, तो पहले कर लेते हैं कैलकुलेट यहाँ पे full amounts of material, full. So 125 plus 75 plus 50 plus 150 plus 50. So full of materials, we will take half of labor and half of overheads. Okay, तो working note में यहाँ पे तुम लिख सकते हो for work in progress. Okay, we take full material plus half labor plus half overheads. So full material, it will be 125 plus 75 plus 150 plus 50. 400. Half labor. 125 plus half overhead, which is 50. So I'll get 575. So on 575, I will find my work in progress. So it will be 575 into 0.5 divided by 12. Okay. So you are going to get 23 lakhs 95,833. 23 lakhs 95,833. Okay, work in progress हो गया. They mark a star on that. Now coming to finished goods. Okay, finished goods, we are going to take on cost of goods sold. Okay, but we will remove our depreciation. Okay, so finished goods पे भी depreciation है. मैंने बोला था तुम्हें हम कैश कॉस्ट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो फिनिश गुड्स में से भी मुझे डेप्रीसिएशन निकालना ही पड़ेगा. ओके, तो मेरा फिनिश गुड्स कितना है टोटल? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 800 माइनस 50 करूंगी, डेप्रीसिएशन 50 है तो यहाँ पे लिख दो इन द वर्किंग नोट, इट विल बी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस डेप्रीसिएशन. So COGS is 800 minus depreciation is 50. So on 750, duration of finished goods they have given me as 1 month period. So यहाँ पे 1 month. So into 1 divided by 12. Okay, so 750 lakhs divided by 12. 62 lakh 50,000. Clear इतना? ठीक है. Finished goods भी हो गया, तो total यहाँ पे all the raw materials, work in progress, finished goods is done. Now my other asset is debtors, current asset. Okay, when I will be calculating debtors, again I have to do on cash concept basis. So I will be saying sales minus depreciation minus NPBT. बराबर है ना?
तो सेल्स मेरा टोटल कितना है, सेल्स 1375, डेप्रीसिएशन इज 50, एनपीबीटी इज 225. तो अभी करो सेल्स माइनस डेप्रीसिएशन माइनस एनपीबीटी 1100 पे तुम्हारा ड्यूरेशन साइकिल आएगा. यहाँ पे कितना है, डेटर्स क्रेडिट पीरियड इज 3 months. तो ठीक है, यहाँ पे 3 months, तो into 3 डिवाइड बाय 12. 275 the answer. 275, no, 27,50,000. Okay, so now debtors is also done. Last में है अपना कैश. तो कैश तो ऑलरेडी they have given it to me 25 लाख. कैश कितना दिया, 25 lakhs. Okay, given. So total current assets is going to be, calculate करेंगे total current assets. Okay, you can remove the, you can then divide by 1 lakh. Okay, so you will get it in, you can remove the zeros afterwards. Okay, so 31,25,000 plus 6,25,000 plus 31,25,000 plus 6,25,000 plus 23,95,833 plus 62,50,000 plus 27,50,000 plus 25 lakhs. That's going to be okay. So raw material holding period, average raw material upon cost of raw material. Similarly, for work in progress, average work in progress, but work in progress is on cost of goods produced. Finished goods holding period will be average finished goods, but finished goods is on the cost of goods sold. Now, see, generally, cost of goods produced. Okay. अभी तक वी आर टेकिंग दिस टू बी सेम एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बट ऐसा होता नहीं है. जरूरी नहीं कि जितना मैंने प्रोड्यूस किया है दैट मच अमाउंट ओनली आई एम गोइंग टू सेल. आई मे हैव प्रोड्यूस 10,000 units, not necessary I have sold all, so my cost of goods sold will be different than my cost of goods produced. When will this difference arise? You know, when there is, okay, if say I had my cost of goods produced, okay, 10,000, but I couldn't sell everything, so I have a closing stock of 1,000. ऊपर से I already had an opening stock, okay, of 2,000. So my cost of goods produced is going to change, and that will be now my cost of goods sold. Okay, cost of goods produced में से अगर opening closing तुम subtract add करते हो, okay, so 2,000 and 1,000, so it will be 11,000 here. So cost of goods sold can be different and cost of goods produced can be different if opening and closing stock is given. ठीक है. Debtors collection period, same thing, average debtors upon the credit sales.
and creditors collection period, average creditors upon credit purchase. Amount of working capital I will require is the amount of sales I generate into the duration of the operating cycle. How much time am I going to take, okay, for my operating cycle to get completed, divided by 12. Okay, so let's solve this one sum based on this concept. Compute the duration of operating cycle for each of the 2 years and comment on the increase and the decrease. Assume 360 days in a year. So we will not do divide by 12 into, sorry, we will not do into 12, we will do into 360. ठीक है, days के हिसाब से करना है, not in months. Okay, and then also suggest 5 steps for operating, for reducing the operating cycle. ठीक है, पहले एक sum तो कर लेते हैं, देखते हैं how to solve, how to find the duration. Okay, चलो question number 15 लिखो. Okay, operating cycle. Particulars. Year 1, year 2. ठीक है, सबसे पहले we will start with the raw materials holding period. ठीक है, raw material holding period. फॉर्मूला क्या है अपना रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड का? इट इज एवरेज रॉ मटेरियल अपॉन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इनटू 360 करेंगे. ठीक है, चलो यहाँ पे लिखते हैं एवरेज रॉ मटेरियल अपॉन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इनटू 360. एवरेज रॉ मटेरियल दिया है 20, अमाउंट्स इज इन थाउजेंड्स. Okay, so we have 20 raw materials and purchases कितना है? Total credit purchase यानी the raw materials is 96 purchases पे करूँगी, right? So it will be 20 upon 96 into 360. Don't do this here, do this in year 1. यहाँ पे कर लो year 1 में 20 upon 96 into 360. That will give you amount. The number will be in days. No, we are doing 360, so 75 days. For year 2, raw materials is 27, purchases 135, total raw materials consumed. So here it will be 27 upon 135 into 360. So that is going to give me 72 days. ठीक है, और ये 75 days है. 72 days for year 2. ये हो गया रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड. सेकेंड, वर्क इन प्रोग्रेस प्रोसेसिंग पीरियड. ओके, फॉर्मूला लिख लो इसका. ओके, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इनटू 360. ठीक है, तो अभी देखो क्या दिया है. एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस 14. कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स दे हैव गिवन मी. ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड दिया ही नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया है. So here I will say my COGS is the same as COGP, cost of goods produced. Okay, so here it will be 14 upon 140 into 360. That will be 36 days. Okay, then it is here it will be 18 upon 180 into 360. This is also coming as 36 days. वर्क इन प्रोग्रेस हो गया. थर्ड, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड. ठीक है, तो
फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड में एवरेज फिनिश गुड्स अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंटू 360. एवरेज है 21 and 24. ठीक है, 21, 24. Cost of goods sold is 140, 180. Divide by 140 and by 180 into 360. So this is coming as 54 days. ठीक है, and this is coming as 48 days. क्लियर इतना? फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड भी हो गया. अभी डेटर्स कलेक्शन पीरियड कर लेते हैं. डेटर्स कलेक्शन पीरियड, that is going to be average debtors upon credit sales into 360. एवरेज डेटर्स कितना है मेरा 32. क्रेडिट सेल्स मेरा कितना है 160. ओके, सो 32 upon 160 into 360, 72 days. And in my year 2 is 50 is the average debtors, 200 is my credit sales, so here it is coming as 90 days. Okay, debtors collection period done. Last is my creditors payment period. Creditors payment period. Average creditors upon credit purchases into 360. So average creditors 16, credit purchases I'll take at 96, here I'll take at 135. So 16 upon 96 into 360 will give me 177 days, and here 18 upon 135 into 360 will give me 48 days. Okay, so for each of the holding period I have found the number of the duration for the holding period for each of them, for materials, for work in progress, for finished goods, for debtors, for creditors. So I need to know now duration. So I just told you that duration of the operating cycle, okay, operating cycle is nothing but the number of days or months for raw materials to then go into work in progress, then to become finished goods, okay, then to generate debtors, but I'll minus my creditors collection period. So when I'll do this total 75 plus 36 plus 54 plus 72 minus 60, 177 days. कर लो, हाँ, ये पूरा करो. Okay, 75 plus 36 plus 54 plus 72, okay, sorry, minus 72 will give you 177 days. No, this is, sorry, this is 60 days. Huh? Creditors payment period for year 1 is 60 days, this is 48 days. Okay, and for year 2, same thing. 72 plus 36 plus 48 plus 90 minus 48, 198 days. Okay, तो ऑपरेटिंग साइकिल मुझे मिल गया. फिर हाउ टू फाइंड माई amount of working capital required. From here only I can find my sales into duration of my operating cycle which I have just found, divide by 12. यहाँ पे हम करेंगे divide by 360. तो करो working capital required for both the years. Amount of working capital required is nothing but sales into duration cycle upon 360. तो सेल्स यहाँ पे मेरा है 160, ड्यूरेशन साइकिल आई गॉट 177 अपॉन 360. यहाँ पे मेरा सेल्स था 200, ड्यूरेशन साइकिल आई फाउंड 198 अपॉन 360. दिस इज कमिंग एज 78.667 and this is 110. So this is going to be in rupees. Okay, working capital required. Clear इतना?
समझा? Yes, sir. ठीक है ना? अभी कुछ नहीं है, अभी एक एकदम ही छोटा सा टॉपिक बाकी है, एकदम ही सिंपल सा, दैट इज बेस्ड ऑन द रेशियोज. ओके, तो सबसे पहले तो now before solving this type of a question which is based on ratios, पहले लिखो, थोड़े बहुत ratios लिख लेना. ओके, ratios. जिसने अकाउंट्स में रेशियोज कर लिया है उनको थोड़ा इजी गिरेगा, बट वेरी सिंपल कुछ नहीं है. ओके, फर्स्ट रेशियोज ऑन सेल्स, वेरी बेसिक वाले रेशियोज हैं, कुछ नहीं है ज़्यादा, एंड ऑन कैपिटल. ओके, तो इफ आई वांट टू नो व्हाट इज माय ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, so it is on sales, no? So gross profit upon sales into 100. Similarly, my net profit ratio also I can find. Okay, how much is my net profit over my sales into 100. On capital, return on capital employed, CE, return on capital employed, is nothing but net profit before interest and tax upon NPBIT upon capital employed in the organization into 100. Then return on net worth or return on shareholders funds. Again, here it will be net profit after tax upon the total shareholders funds which I have into 100. ठीक है ना? फिर रिटर्न ऑन इक्विटी फंड्स, तो ये तो हमने किया ही है, नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी अपॉन इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड्स into 100. And return on total assets, अगर मैं पूछूं कि how much return am I getting on my total assets, it will be nothing but NPBIT upon your total assets into 100. ठीक है, तो these are the certain profitability ratios wherein you are either using net profit after tax or net profit before interest and tax और नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट, इसके लिए इसको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बोलते हैं. ओके, देयर आर सम अदर रेशियोज आल्सो, से इफ आई एम टेक डेटर्स टर्नओवर रेशियो. ओके, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, तो टर्नओवर मीन सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, सेल्स अपॉन डेटर्स. ठीक है, देन इफ आई टेल यू इन्वेंटरी turnover ratio, so inventory means stock is always on cost upon average stock. average debtors, अगर debtors भी average कर सकते हैं. then fixed asset turnover ratio. Okay, all these are all turnover, so sales upon fixed assets. total asset turnover भी total asset कर सकते हो, sales upon total assets. Then we have sales minus COGS will give me gross profit. ठीक है ना? Okay, so ये basic से सब ratios है. Now based on that ratios, okay, there is one small sweet sum. Following information is given of the Perfume Limited. Okay, यानी उनका बैलेंस शीट ऐसे बना हुआ नहीं है. They have just given me my short-term debts, and they have given me my net sales is 20 lakhs rupees. Debt asset ratio is 0.6. Debtors turnover ratio based on net sales. Inventory turnover ratio, fixed asset turnover ratio, net profit margin, gross profit margin, return on investment भी दिया है, देखेंगे. Okay, and they are telling us we have to fulfill the entire balance sheet, ये करना है. Okay, तो चलो ये बैलेंस शीट भरना है ना, तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ व्हाट इज गिवन. व्हाट इज गिवन टू अस? नेट सेल्स. क्वेश्चन नंबर 19 बेस्ड ऑन रेशियोज. ओके, गिवन इज सेल्स.
नेट सेल्स कुछ दिया है ₹20 lakhs. ओके अभी इसके बेस पे हम क्या ढूंढ सकते हैं वो देखते हैं. डेट एसेट रेशियो तो अभी नहीं कर सकते. डेटर्स टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन नेट सेल्स बोल ही रहे. डेटर्स टर्नओवर रेशियो ओके 2 times means. So debtors turnover ratio, what is the formula? Sales upon debtors. ठीक है वो रेशियो दे दिया है ये 2 है. सेल्स मुझे पता है 20 lakhs upon debtors. Therefore debtors is equal to ₹10 lakhs. ये हो गया डेटर्स मिल गया. तो बैलेंस शीट में डाल सकती हूँ मैं यहाँ पे डेटर्स 10 lakhs डाल दो. ओके नाउ I can also do inventory turnover ratio. Now inventory turnover ratio is on COGS. Okay. तो अगर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो करना है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ओके तो हमें चाहिए COGS अपॉन स्टॉक. कुछ भी नहीं है अपने पास कैसे करेंगे. तो COGS तो हमें मिल सकता है ना. COGS का फॉर्मूला क्या है. COGS कैसे मिलेगा अभी बोला था मैंने. सेल्स माइनस COGS विल गिव मी माय ग्रॉस प्रॉफिट. बराबर. ग्रॉस प्रॉफिट में ढूंढ सकती हूँ. देखो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 25% है ना. तो लिखते जाओ ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स. ओके सेल्स दे हैव गिवन मी एज 20 lakhs. उस पे 25% का मार्जिन. सो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा तुम्हें 5 lakhs आएगा है ना. क्लियर इतना 20 lakhs उस पे 25% 20 lakhs पे 25% 5 lakhs अपना ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. ओके तो अगर मैं सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दूं आई गेट माई COGS. सो 20 lakhs minus 5 lakhs. Okay, sales minus gross profit, that will be my COGS. The cost of goods sold will be 15 lakhs. Now I can put this in my formula. Cost of goods sold कितना है 15 lakhs है. ओके स्टॉक मुझे पता नहीं है लेकिन इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कितना दिया है मुझे 1.25. Therefore stock will be equal to 15 lakhs divided by 1.25 will be 12 lakhs. तो स्टॉक भी मिल गया. तो यहाँ पे इन्वेंटरी में 12 लाख. ठीक है क्लियर इतना. ओके अभी नेक्स्ट तो स्टॉक आई हैव ऑल्सो गॉट माई ग्रॉस प्रॉफिट. ओके आई हैव ऑल्सो गॉट माई COGS. ओके जो भी मिल रहा है उसको एक बॉक्स में डाल दो ताकि वी नो क्योंकि दीज आर द फिगर्स वी हैव ऑलरेडी अराइव्ड एट. सो हो गया इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो. अभी फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो ये भी मिल सकता है हमें. फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो इज सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो दिया है 0.8 तो 0.8 सेल्स इज 20 lakhs upon fixed assets. Therefore fixed assets will be equal to 20 lakhs divided by 0.8. So 25 lakhs. ठीक है सो ये भी लिख दो अपने यहाँ पे नेट फिक्स्ड एसेट्स में 25 लाख.
So this all I have got now. Now they are saying my return on investment is 2%. ठीक है, पहले ना नेट प्रॉफिट मार्जिन ढूंढ लेते हैं. नेट प्रॉफिट मार्जिन दिया ना 5%, पहले वो ढूंढ लेते हैं. मैं बताती हूँ क्यों. ओके, नेट प्रॉफिट margin is equal to 5%. So 5% obviously on sales. So that is going to be rupees 1 lakh. Rupees 1 lakh will be my net profit. Now, abhi return on investment is nothing but my net profit after tax upon my investments, total investments. Okay, total investments. The return on investment they have given me, it is 2%. Net profit after tax, this net profit here which I have got 1 lakh. So this is going to be my total investments. Therefore my total investments will now be equal to 50 lakhs. Okay, it will be 1 lakh divided by 2%. टोटल इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या है कि ये टोटल एसेट्स है. टोटल इन्वेस्टमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग लायबिलिटी कॉरेस्पॉन्डिंग एसेट है ना. सो टोटल इन्वेस्टमेंट इज नाउ 50 lakhs. तो यहाँ पे भी 50 lakhs. क्लियर इतना. तो कैश मेरा क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 25 lakhs plus 12 lakhs plus 10 lakhs minus 50. So 3 lakhs. 3 lakhs is my cash. Okay, तो यहाँ पे 50 lakhs आ गया. Okay, और ऑलरेडी 10 lakhs मुझे यहाँ पे दिया है. तो अभी मुझे इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट ढूंढना है. उसके लिए भी कुछ दिया है. डेट एसेट रेशियो 0.6 दिया है. ठीक. क्वेश्चन नंबर 9 दे आर टेलिंग मी पॉइंट नंबर 9 डेट to asset ratio is 0.6. Means out of 1 full 1, 0.6 is debt. ऐसा debt to asset ratio. So now debt to asset ratio मतलब debt, total debt upon total assets. Okay, is 0.6. अभी debt तो मुझे पता नहीं है, but total assets मुझे पता है. बराबर ना. सो मेरा डेट कितना हो जाएगा 50 lakhs का इंटू 0.6 30 lakhs. बराबर. तो टोटल डेट इज 30 lakhs. शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी दिया है 20. तो लॉन्ग टर्म कितना होगा मेरा 20 lakhs है कि नहीं. बिकॉज टोटल डेट दे आर टेलिंग मी, आई जस्ट फाउंड इट इज 30 lakhs. शॉर्ट टर्म दिया है 10. तो लॉन्ग टर्म कितना है 20. तो ये ऊपर इक्विटी विल बी माई बैलेंसिंग. ओके, सो दिस इज हाउ वी कंप्लीट आवर बैलेंस शीट. ओके, दिस यू डोंट हैव टू डू. ऑलराइट. So with this, no, we complete our working capital management chapter. Okay, in working capital management we have done everything. We have done management of stock, management of debtors, management of cash. Okay, basically in cash we mostly did working capital requirement, how to find the working capital required. So one was the normal method and the other is cash cost concept method. Okay, which we have also done today. Okay, and the rest was the ratios. We did the ratios to find the duration and we did the ratios to fill our balance sheet also. Okay, so with this the entire working capital is over. Okay, thank you everyone. Thank you.